हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राज जाधव बैक अगेन विद दिस न्यू ब्लॉग। और आज हम टेस्ट करेंगे द Redmi Note 7 Pro का कैमरा और देखेंगे कि एक्चुअल में वो 48 मेगापिक्सल वाला फंडा काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए मेरा फ्रेंड चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरे साथ, शैगी, असली नाम उसका सागर कावले। हियर इट इज़। देन सी यू इन द नेक्स्ट शॉट। और उसके लिंक्स इंस्टाग्राम वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है। सी यू इन द नेक्स्ट शॉट। So yeah, what we have here is a Canon EOS 5D Mark III 22.3 megapixel DSLR with a full frame sensor of CMOS and Canon zoom lens of 24 by 105 mm. And versus we have here is a Redmi Note 7 Pro 48 megapixel plus 5 megapixel depth sensor dual camera setup with a f-stop of 1.79 and 1.6 micrometer. And with a 5 megapixel depth sensor having f2.2 and 1.12 micrometer primary 6p lenses. So with a Sony IMX586 sensor which is having AIS2 for stable videos and can shoot up to 4K with 30 frames per second and 1080p at 60 and 30 fps both, and 720 at 60 and 30 fps both, and 120 frames per second too, with a time-lapse slow motion panorama, portrait mode, etc. And a 13 megapixel front camera with a 3p lens and PDAF on both the sides, rear and front as well. And we having over here is f2.0 aperture and a pixel size of 1.12 micrometer and AI front camera. That's it for now. So here I am with both the cameras in the hand. Camera in the sense मेरा कैमरा और ये the Redmi Note 7 Pro. और अभी इसका कंपैरिजन देख रहा हूँ और सीधा मालूम पड़ रहा है कि Redmi Note 7 Pro वाइड है विजन में। और इसमें 1080p 30 फ्रेम्स पे दिया है, तो ये ज़रा शॉकिंग है। मे बी Xiaomi अपडेट रोल आउट करे और 60 फ्रेम्स दे दे इसमें भी, अच्छा होगा ज़रा। और ये ऑटो पे ही है दोनों भी, मेरा कैमरा भी और ये फ़ोन भी। देख लीजिएगा कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है और क्या नहीं। मेरा तो ये रेगुलर सेटअप है मेरा कैमरा। इसमें मुझे मतलब यही थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। पर लाइटिंग के मामले में Redmi Note 7 Pro इज़ दी बेस्ट अभी के लिए, तो मेरे साइड बाय साइड कंपैरिजन में। और कलर्स भी बहुत नेचुरली अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। सो इट्स टाइम टू एंड द ब्लॉग। और कैसा लगा क्या लगा बता दीजिएगा इन द कमेंट्स बिलो। और शैगी भाई की ये टाइम बहुत हेल्प है इन शॉट्स में, क्योंकि ये एक इंसान का काम नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैंडल बोथ द कैमराज एट द सेम टाइम।
मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था और वो कैमरा। सो या आप देख सकते हो, और इंस्टाग्राम पे ये फ़ोटोज़ आ जाएंगे, कुछ 1-2 शॉर्ट्स मे बी इफ़ पॉसिबल। सो अब तक के लिए यही था, एंड इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।